इंडस्ट्री आपके साथ कोऑपरेशन की भूमिका में है, कंपटीशन की भूमिका में नहीं है। वो स्टार्टअप्स को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानती, वो आप बनने के बजाय जॉब गिवर बने। तो हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स ने 62 पीपल लोगों को एम्प्लॉयबल किया, वहाँ पर एम्प्लॉय हैं और we provide next. Everyone wants to start up. हम सबको स्टार्ट करना है, पर हमने कभी ये सोचा नहीं why do we want to start up? What is the need of startup? And apart from starting up, there is a backside story, the negative side story of the startups, which we are not aware of. In mature ecosystems, what happens is 80% of the startups close down by the first year, and the rest 20% of startups close down, or less 15% of the startups close down in the next 5 years. So there is a dearth of investors, there is a dearth of the right kind of mentors. Hiring of drones would be more in the business in future compared to selling of drones. सर, हायरिंग अभी हो रही है, सेलिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं 90% ड्रोन्स अभी इलीगली चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, मतलब डिमांड है। We have a margin of 100%, उसके बाद भी हम उनसे 1/3 में बना रहे हैं। That's where the need comes from, just for thinking. Like I said, safety and security is a big concern. जैसे for example solo travelers के लिए as well. So that's one point that we are actually considering a lot, especially for old age parents. If my parents want to go for a pilgrimage, and if I am traveling alone, all of that is actually a very essential part of the concept. Why would somebody not go to a travel agent in proper? सर, अगर आपको मनाली जाना है, सिंगापुर जाना है, आपको 19 अप्रैल को जाना है, तो उसका ट्रिप हो सकता है 22 अप्रैल को जा रहा हो, जब आपको वो नहीं। लेकिन सिंगापुर के लिए जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ ट्रैवल एजेंट्स होंगे जो 19 अप्रैल को निकलते हैं। This is Amya from AICR Tech. We are a for-profit incubation center here in Mumbai. You have been an ecosystem player in Gujarat and you have got great learnings there. So how do you see Gujarat ecosystem, say 4 years back, and Nepalese ecosystem combined? The strengths and the weaknesses that you see there and you see here in Calcutta. And what I have understood sitting here right now is the starting step, the stepping stone of MP ecosystem is much better than all the ecosystems across it. Wow. इस पे तो जोर से ताली होना चाहिए guys. Come on, I'm not doing that. So, since you mentioned that the startups are very selective about mentors, so are there any startups also which mentors should keep away from? ज़्यादा काम नहीं करते, वो मेंटर करके आपको बता देते हैं ये प्रॉब्लम है, इसको आप ऐसे करो, या ये नेटवर्क इस बंदे से मिलो, या ये आप कर लो, आपको गाइडेंस दे सकते हैं, पर आपकी जर्नी नहीं चल सकती। तो मेंटर्स आर Mentor and strategic advisor, are these two different people that people say, or they would come in the same category? So consultants slash strategic advisors slash mentors, guides, more or less same banyan tree है, उसके अंदर अलग-अलग branches हैं, वैसा ही scenario है। Would not make any difference काम, उसको strategic advisor बोलो, कुछ भी बोलो, पर आपका काम अगर वो कर देता है, नाम nomenclature कुछ भी हो, what's in the name, पर काम अगर आपका हो जाता है as a startup, that is valid. My question is for Yogesh ji. I have registered a company in year 2017, and over a period of time, requirements do change, and our requirement and the same thing happened with us. So we are trying to get a investor right now, but how is it possible to onboard a investor when our company is an LLP? In case of company, it is possible, but in case of LLP, one-person company, they are already having their partners in place with the capital contribution. So you need to, whatever you have created is LLP, so investor cannot come into, because how can you dilute your stake?
बट उसको जैसे ऑनबोर्ड हम लोग करें मतलब एज ए पार्टनर आप एज ए पार्टनर आप एज ए पार्टनर कर सकते हैं। LLP में आप उसको एज ए पार्टनर लेके आ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन सिद्धार्थ सर के लिए है। सर, हाउ कैन यूनिवर्सिटी एंड इंक्यूबेशन सेंटर वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ स्टार्टअप इकोसिस्टम? हम लोग एग्जैक्टली उसी जर्नी को फॉलो कर रहे हैं। एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इंक्यूबेशन सेंटर होने की अपने फायदे, अपने स्ट्रेंथ है। एक तो हमें बड़ा कैप्टिव ऑडियंस मिलता है जहाँ पे हम प्री फेज 0 से भी काम कर सकते हैं। वर्ल्ड ओवर आई बिलीव एंड इन इंडिया ऑल्सो IIT चेन्नई, IIT मुंबई के इंक्यूबेशन सेंटर्स आर वन ऑफ द बेस्ट incubation centers. Some of the most successful technologies have come from those labs. और एक यूनिक चीज जो ये होती है वो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बट स्टूडेंट फैकल्टी कॉम्बिनेशन एक्चुअली स्टार्टअप बनाता है इन सक्सेसफुल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन स्टार्टअप. सो दैट इज व्हाट वी वांट टू promote. That checks the box of research, that checks the box of consultancy, that checks the box of startup, of course. तो हम इसको करने की अभी कोशिश कर रहे हैं. इस इवेंट कितने बेनिफिशियरी होते हैं स्टार्टअप्स के लिए? ये इवेंट जो है स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम होता है उसमें देयर आर स्टार्टअप्स, देयर इज ए इंक्यूबेटर, देयर इज ए मेंटर, देयर इज ए इन्वेस्टर, देयर इज ए नॉलेज पार्टनर और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. सो टुगेदर ऑल दीज इन सच ए वर्कशॉप will boost the entire startup movement. सर, आज मैंने आपको जितना भी सुना, आपने एक मेंटर वर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया है. तो जो हमारी ऑडियंस आज के इवेंट नहीं देख पाई है उनके लिए आप थोड़ा सा मैसेज दीजिए कि मेंटर कितना इंपॉर्टेंट है. देखिए, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई मेंटर ज़रूर होता है, पर आजकल जो स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो मेंटरशिप को हम लोग सीरियसली नहीं लेते. और कई बार क्या होता है, पैसा भी होता है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, पर राइट गाइडेंस अगर सही टाइम पे नहीं मिलती तो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं रुक जाता है. और उसी को अगर हम सही तरीके से एक मेंटरशिप के, ये ज़रूरी नहीं कि एक मेंटर राइट ही होगा, पर एक मेंटर अगर आपको राइट बोर्ड पे अगर आपके आ जाता है और उसके बाद अगर आपको स्टार्टअप जर्नी अच्छी हो सकती है तो उससे बढ़िया तो कोई चीज़ नहीं है. तो उसी चीज़ को हमको सॉल्व करना चाहिए. मेंटर्स कैन बी एनीवन. योर फर्स्ट मेंटर्स बिकम्स योर पेरेंट्स बिकम्स योर फर्स्ट मेंटर. तो आपके दोस्त हो सकता है कोई भी मेंटर, आपका इंडस्ट्री से कोई हो सकता है मेंटर. तो अगर ये सब अगर आप ढूंढ सकते हैं तो बहुत बढ़िया है. नहीं ढूंढ सकते तो भी कोई तकलीफ नहीं. यू आर ऑल्सो अ मेंटर टू योर ओन सेल्फ ऑल्सो. तो गाइडेंस होना बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है. एक आउटसाइड गाइडेंस हर टाइम ज़रूरी होता है. सर, एक मोटिवेशनल पंच फॉर ऑल द स्टार्टअप्स क्या होगा? मोटिवेशनल पॉइंट तो स्टार्टअप करना ही मोटिवेशन है. देयर इज नथिंग मोर मोटिवेटिंग देन स्टार्टिंग अ startup. If you start a startup, you give opportunity to yourself to prove yourself to yourself, not to anyone else. And also you give an opportunity to other people to learn from you, to engage in your company and then explore. And the best part of a startup is that you are going to create employment, you are going to create innovation, you are going to create wealth for the country, and that is very important. मध्य प्रदेश में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर यह है कि मध्य प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम नेचुरली ग्रो कर रहा है. और नेचुरली जब इकोसिस्टम ग्रो करता है, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा जंगल है, वो नेचुरली ग्रो कर रहा है, लेकिन उसमें घूमने की एक जगह बना दी जाए. मान लीजिए एकांत पार्क है हमारा, सिल्वर जुबली वो पार्क है, तो वहाँ एक घूमने की जगह बन गई. तो नाउ एवरीबडी इज इंटरेस्ट. तो सिमिलर थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो कि हमारे पास इकोसिस्टम नेचुरली ग्रो कर रहा है, स्टार्टअप नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, इनक्यूबेटर्स आ रहे हैं, लेकिन इनको सबको एक कॉम्प्रहेंसिवली एक जगह लाकर एडवांटेज ड्रॉ करना, बेनिफिट ड्रॉ करना, ये एक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है और वही इन इवेंट्स के थ्रू होता है. फिर दूसरी बात जो अब इन इवेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जुड़ गया है वो है पिचिंग सेशन फॉर इन्वेस्टमेंट. हमारे स्टार्टअप के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है फंडिंग. और फंडिंग के लिए वो 1-to-1 बेसिस पे इन्वेस्टर्स के सामने अपना केस रख सके, बात रख सके, वो इन इवेंट्स में आ गई है. और हम करीब अब सब इवेंट में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस ढंग की चीज़ जरूर. Start-up Entrepreneurship Conclave 2019 organized by VSD Chamber of Commerce and Industry, VASPL and Government of MP. I would like to extend my sincere gratitude to our Chief Guest, Mr. K.C. Gupta, Principal Secretary, MSME, Government of MP, for sparing your valuable time and sharing your views and letting us know about all the support which government is going to extend to all startups. Instead of your hectic schedule, sir, you take out time for us. Thank you so much. We would like to thank
Mr. V.C. Dubey sir, Nodal Officer and in charge Startup and Incubation Cell. We are thankful to our own Chairman sir, Mr. Subhash Vithaldas ji, who has always been a source of inspiration for all of us. I would like to thank our very dynamic and very active co-chairman sir, Mr. Pradeep, who has been the person behind taking initiatives of all this conclave. I extend my thanks to Mrs. Ravisha Merchant for giving this a very warm welcome to the all the dignitaries, and I would like to thank our regional director sir, Mr. R.G. Dwivedi sir, who has always been giving the opportunities for all of us to bring some new events and taking the initiatives. I would like to thank all the partners of this event